Connected Jill 6V7738 6V7738 disconnected. Ready to air. Connected Jill 6V7738 आवाज आए ना, चुटकी सी है। ठीक है ना, आप बताओ। Sambuddho Svakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Sadhammam Sasangam Ime sakare yata arahan aropite sadhuno vante bhagavan suchira parinebhutopi pachima janatanukambamanasa Ime sakare dugatpanakara bhute patiganatu amhakam digaratam hitaya sukhaya arham samma sambuddho bhagava buddhan bhagavantam Abhivadeni Sakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Handmayam Buddhassa Bhagavato Ubbhagavadamkaram Karomasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handmayam buddhanusatinayam karomasi tam ho vanam Bhagavantang evam kalyano kiti saddo abhugato iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussan buddho bhagavati. Handmayam buddha vigitim karomasi buddhavaran Varatadi gunabhiyuto Suddha vinyana karuna isamagatato Bodhesiyo sujanatam kamalam basuro Vandamiham tamariyam sirasajinendam Buddhoyo yo sabbapaninam saranam khemamuttamam Pathamanusatitthana vandami tam sirenam Buddhasasmi daso Buddho me samikissaro Buddhasaham Niyademi sariran jivitan chidam Vandanti Toham charisami buddhaseva sudoditam Natti me saranang anya buddho me saranang varang Etena sajjavajjena vaddeyam sattu sasani Buddhang me vandamanena yam punyam pasutam eda Sabbepi antarayami mahe sum tassa tejasa Kaina vacaya cetava Tukamam pagatamaya Yadho patiganatu vacaya Karantare sambharitam bhavate. Handmayam dhammanusatinayam karomasi Svakhato Bhagavata dhammo Sanditthiko akaliko Ehi passiko Opanaiko paccattam veditabbo vinyohiti. Handmayam dhammavigitim karomasi Svakhatatadi guna yogavasi nasiyo Yo magga paka pariya Tivimoka vedo Dhammo kuloka patana Tadadhari dhari Vandamiham tamaran Varadhamma metam Dhammo yo sabbapaninam Saranam khemamuttamam Athiyanusatitthana vandami tam sirenam Dhammasasmi dasiva Dhammo me samikissaro Dhammasam niyademi sarirang jivitam chidam Vandantoham charis
Dhammaseva sudhammatam Natti me saranang anyang dhammo me saranang varang Hitena sajja vajjena vaddheyam sattu sasane Dhammang me vandamanena yam punyam pasutam eda tabbepi antarayami mahesum tasya tejasa kayena vacayavacetsa dhamme kammam pavatamai dhammo patiganato chentam kalam tare samvaritam dhamme Andamayam Sanghanusati nayam karomasi Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Nyamichi patipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atta parisa pungala Esu bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahune Dakhineyo anjali karaniyo Anuttarang punyaketa lokasati Andamayam Sanghavigitim karomasi Sadhamma josu Supatipatti gunadiyuto Yuvattavidho ariya puggala sangaseto Siladi dhamma pavarasaya Sayakaya Citto vandamiham tamariyana ganam susuddham buddhoyo dang sanghoyo sabba paninam saranam kemam uttamam tatyanusatitthana vandamitam sirenam Sanghasasmidasoa Sangho me sami kissaro Sanghasaham niyademi Sariran jivitan chidam Vandantoham charissam Sanghase patipannatam Natti me saranang anyak Sangho me saranang varang Etena sajja vajjena vaddheyam sattu sasane Sangham me vandamanena yam punyam pasutam eda sabbepi antarayami mahesum tasya tejasa Nato centam kalantare samvaritam sanghe अब हम आदित्य पर्याय सूत्र का पाठ करेंगे Page 116 in the books. Sutang eka Sutang ekang samayang bhagavayang viharat
ธิกายาสิเสสาดิงบิคุสหเสนะทะ Exit. โกภะคะวะภิกขุอามันเตสิสาปังภิกขเวอาทิกังคิญจภิกขเวสาปังอาทิกังจักขุงภิกขเวอาทิกังรูปาอาทิตังจักขุวิญญาณังอาทิตังจักขุสัมปัสโสอาทิโตยังปิดังจักขุสัมปัสสะปัจจยามุปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตังจาติยาจารา มรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิโสทังอาทิตังสัพพะอาทิตังโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมปัสโสอาทิโตยังปิดังโสตสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตังจาติยาจารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิกานังอาทิตังกันดาอาทิตังกานวิญญาณังอาทิตังกานสัมปัสโสอาทิโตยังปิตังกานสัมปัสสะปัจจยามุปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตังจาติยาจารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิชีวาอาทิตังรัสสะอาทิตังชีวาวิญญาณังอาทิตังชีวาสัมปัสโสอาทิโตยังปิดังชีวาสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตังจาติยาจารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิกายโยอาทิโตโพธาปาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายสัมปัสโสอาทิโตยังปิดังกายสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขม
สุขังวาทัมปิอาดิทังเกนะอาดิทังอาดิทังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาดิคังจาติยาจารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิดุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิทันติวทามิมโนอาดิโตธัมมาอาดิตามโนวิญญาณังอาดิตังมโนสัมปัสโสอาดิโตยัมปิดัมมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิดังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาทัมปิอาดิตังเกนะอาดิตังอาดิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาดิตังจาติยาจารามรณะนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาดิทันติวดามิเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกจักขุสมิงปินิบินตติรูปเปสุปินิบินตติจักขุวิญญาเนปินิบินตติจักขุสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังจักขุสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินตติโสตัสมิงปินิบินตติสาเทสุปินิบินตติโสตวิญญาเนปินิบินตติโสตสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังโสตสัมปัสสะปัจจยามุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินตติกานัสมิงปินิบินตติกันเตสุปินิบินตติกานวิญญาเนปินิบินตติกานสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังกานสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินตติจีวายปินิบินตติรสเสสุปินิบินตติจีวาวิญญาเนปินิบินตติจีวาสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังจีวาสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินตติกายาสมิงปินิบินตติโพธาเปสุปินิบินตติกายาวิญญาเนปินิบินตติกายาสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังกายาสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินตติมนัสมิงปินิบินตติธัมเมสุปินิบินตติมโนวิญญาเนปินิบินตติมโนสัมปัสเสปินิบินตติยัมปิดังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปาจติเวทอิทังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิบินต
ตินิพพินตังวิราชติวิราคาวิมุตชติวิมุตตัสสมิวิมุตตมิติญาณังโหติกินาจาติวุสิตังพระมจาริยังคตะการณียังอาปารังอิกาตายาติปัจจานาติทิอิตมะโวจะภะคะวะอะธัมมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุอิมัสสมิงจะปนเวยากรณัสสมิงอัญญมาเนตัสสะภิกขุสหัสสะสะอนุปาทายะอัสสะเวหิจิตตานิวิมุตติสุติAditta pariyaya sutta nititam Chakuma We will now hear desana by Ajahn Chah. Dhamma goes westward is recited by Ajahn Amaru. English translation of that. Connected Job 6V77382D. Connect PLD laptop Mr. PLD Heart GTN71 in focus N23G. Mobile device not PLD laptop.
Mobile device not found. Connected to OnePlus 3G. Connected to OnePlus 3G. OnePlus 3G disconnected. Ready to connected to OnePlus 3G. This is chapter 9. This is entitled The Dhamma Goes Westward. कुछ करना चाहता था मैं, स्पीड स्लो नहीं हो रही ना, समझ नहीं आ रहा. This is entitled The Dhamma Goes Westward. And again, this is from Paul Breiter's translations. Is teaching us. So there's no record of exactly when this was recorded, but it's in the form of questions and answers, and I believe that the questions are coming from Paul Breiter, Varapanyo Bhikkhu, as he was. He was travelling with Luang Por Chah in America as a layman and as an attendant during 1979, so I suspect that this recording was made by Paul during that particular period. The Dhamma Goes Westward. Question. A friend of mine went to practice with a Zen teacher. He asked him, when the Buddha was sitting beneath the Bodhi tree, what was he doing? The Zen master answered, he was practicing Zazen. My friend said, I don't believe it. The Zen master asked him, what do you mean you don't believe it? My friend said, I asked Goenka the same question, and he said, when the Buddha was sitting under the Bodhi tree, he was practicing Vipassana. So, everybody says the Buddha was doing whatever they do. Luang Por Chah's answer. When the Buddha sat out in the open, he was sitting beneath the Bodhi tree. Isn't that so? When he sat under some other kind of tree, he was sitting beneath the Bodhi tree.
There's nothing wrong with those explanations. Bodhi means the Buddha himself, the one who knows. It's okay to talk about sitting beneath the Bodhi tree, but lots of birds sit beneath the Bodhi tree. Lots of people sit beneath the Bodhi tree, but they are far from such knowledge, far from such truth. Yes, we can say, quote, beneath the Bodhi tree, unquote. Monkeys play in the Bodhi tree. People sit there beneath the Bodhi tree, but this doesn't mean that they have any profound understanding. Those who have deeper understanding realize that the true meaning of the Bodhi tree is the absolute Dhamma. So in this way, it's certainly good for us to try to sit beneath the Bodhi tree. Then we can be Buddha. But we don't need to argue with others over this question. When one person says the Buddha was doing one kind of practice beneath the Bodhi tree, and another person disputes that, we needn't get involved. We should be looking at it from the viewpoint of the ultimate, meaning realizing the truth. There is also the conventional idea of Bodhi tree, which is what most people talk about. But when there are two kinds of Bodhi tree, people can end up arguing and having the most contentious disputes, and then there's no Bodhi tree at all. It's talking about the Paramattha Dhamma, the ultimate truth, the level of ultimate truth. So in that case, we can also try to get underneath the Bodhi tree. That's pretty good. Then we'll be Buddha. It's not something to be arguing over. When someone says the Buddha was practicing a certain kind of meditation beneath the Bodhi tree, and someone else says, no, that's not right, we needn't get involved. We're aiming at Paramattha Dhamma, meaning dwelling in full awareness. This ultimate truth pervades everything. Whether the Buddha was sitting beneath the Bodhi tree or performing other activities in other postures, never mind. That's just the intellectual analysis people have developed. One person has one view of the matter, another person has another idea. We don't have to get involved in disputes over it. Where did the Buddha enter Nibbana means extinguished without remainder, finished. Being finished comes from knowledge of the way things really are. That's how things get finished, and that is the Paramattha Dhamma. There are explanations according to the levels of convention and liberation. They are both true, but their truths are different. For example, we say that you are a person, but the Buddha will say, that's not so. There's no such thing as a person. So, we have to summarize the various ways of speaking and explanation into convention and liberation, sammuti and vimutti. We can explain it like this. Previously, you were a child. Now you're grown up. Are you a new person or the same person as before? If you're the same as the old person, how did you become an adult? If you're a new person, where did you come from? But talking about an old person and a new person doesn't really get to the point. This question illustrates the limitations of conventional language and understanding. If there is something called big, then there is small. If there is small, there is big. We can talk about small and large, young and old, but there are really no such things in any absolute sense. You can't really say somebody or something is big. The wise do not accept such designations as real, but when ordinary people hear about this, that big is not really true and small is not really true, they're confused, because they're attached to concepts of big and small. You plant a sapling and watch it grow. After a year, it's 1 meter high. After another year, it's 2 meters tall. Is it the same tree or a different tree? If it's the same tree, how did it become bigger? If it's a different tree, how did it grow from the small tree? From the viewpoint of someone who's enlightened to the Dhamma and sees correctly, there is no new or old tree, no big or small tree. One person looks at a tree and thinks it is tall, another person will say it's not tall. But there is no tall that really exists independently. You can't say someone is big and someone is small, someone is grown up and someone else is young. Things end here and problems are finished with. If we don't get tied in knots over these conventional distinctions, we won't have doubts about practice.
I've heard of people who worship their deities by sacrificing animals. They kill ducks, chickens and cows and offer them to their gods, thinking that will be pleasing to them. This is wrong understanding. They think they're making merit, but it's the exact opposite. They're actually making a lot of bad karma. Someone who really looks into this won't be thinking like that. But have you noticed? I'm afraid people in Thailand are becoming like that. They're not applying real investigation. Question. Is that vimamsa, meaning investigation or inquiring, reviewing? Yes, it means understanding, cause and result. Question. Then the teachings talk about chanda, aspiration, virya, exertion, and chitta, mind. Together with vimamsa, these are the 4 iddhipada, the basis for accomplishment. Answer. When there is satisfaction, is it with something that's correct? Is exertion correct? Vimamsa has to be present with these other factors. Question. Are chitta and vimamsa different? Answer. Vimamsa is investigation. It means skillfulness or wisdom. It's a factor of the mind. You can say that chanda is mind, virya is mind, chitta is mind, vimamsa is mind. They're all aspects of mind. They can all be summarized as mind. But here they are distinguished for the purpose of pointing out these different factors of the mind. If there is satisfaction, we may not know if it's right or wrong. If there's exertion, we don't know if it's right or wrong. Is what we call mind the real mind? There has to be vimamsa to discern these things. When we investigate the other factors with wise discernment, our practice gradually comes to be correct, and we can understand the Dhamma. But Dhamma doesn't bring much benefit if we don't practice meditation. We won't really know what it's all about. These factors are always present in the mind of real practitioners. Then, even if they go astray, they will be aware of that and be able to correct it. So their path of practice is continuous. People may look at you and feel your way of life, your interest in Dhamma, makes no sense. Others may say that if you want to practice Dhamma, you ought to be ordained as a monk. Being ordained is not really the crucial point. It's how you practice. As it's said, one should be one's own witness. Don't take others as your witness. It means learning to trust yourself. Then there's no loss. People may think you're crazy, but never mind. They don't know anything about Dhamma. Others' words can't measure your practice. And you don't realize the Dhamma because of what others say. I mean, the real Dhamma. The teachings others can give you are to show you the path, but that isn't real knowledge. When people meet the Dhamma, they realize it specifically within themselves. So the Buddha said, the Tathagata is merely one who shows the way. When someone is ordained, I tell them, our responsibility is only this part. They're reciting Acharya, they have done their chanting. I've given you the going forth and the vows of ordination. Now our job is done. The rest is up to you to do the practice correctly. Teachings can be most profound, but those who listen may not understand. But never mind, don't be perplexed or over profundity or lack of it. Just do the practice wholeheartedly and you can arrive at real understanding. It'll bring you to the same place the teachings are talking about. Don't rely on the perceptions of ordinary people. Have you read the story about the blind men and the elephant? It's a good illustration. Suppose there's an elephant and a bunch of blind people are trying to describe it. One touches the leg and says it's like a pillar. Another touches the ear and says it's like a fan. Another touches the tail and said, no, it's not a fan, it's like a broom. Another touches the shoulder and says, it's something else again from what the others say. It's like this. There's no resolution, no end. Each blind person touches part of the elephant and has a completely different idea of what it is. But it's the same one elephant. It's like this in practice. With a little understanding or experience, you get limited ideas. You can go from one teacher to the next, seeking explanations and instructions, trying to figure out if they're teaching correctly or incorrectly, and how their teachings compare to each other. Some monks are always traveling around with their bowls and umbrellas, learning from different teachers. They try to judge and measure.
So when they sit down to meditate, they're constantly in confusion about what's right and what's wrong. This teacher said this, but that teacher said that. One guy teaches in this way, but the other guy's methods are totally different. They don't seem to agree. It can lead to a lot of doubt. You might hear that certain teachers are really good, and so you go to receive teachings from Thai Ajahns, Zen masters and others. It seems to me you've probably had enough teaching, but the tendency is to always want to hear more, to compare, and to end up in doubt as a result. Then each successive teacher increases your confusion further. There's a story of a wanderer in the Buddha's time that was in this kind of situation. He went to one teacher after the next, hearing their different explanations and learning their methods. He was trying to learn meditation, but was only increasing his perplexity. His travels finally brought him to the teacher Gautama, and he described his predicament to the Buddha. He said, "Doing as you have been doing will not bring an end to doubt and confusion," the Buddha told him. "At this time, let go of the past. Whatever you may or may not have done, whether it was right or wrong, let go of that now. The future has not yet come. Don't speculate over it at all, wondering how things might turn out. Let go of all such disturbing ideas. It is merely thinking. Letting go of past and future, look at the present. Then you will know the Dhamma. You may know the words spoken by various teachers, but you still do not know your own mind. The present moment is empty. Look only at arising and ceasing of sankhara. See that they are impermanent, unsatisfactory, and empty of self. See that they are really thus. Then you'll not be concerned with the past or the future. You will clearly understand that the past is gone and the future has not yet arrived. Contemplating in the present, you will realize that the present is the result of the past. The results of past actions are seen in the present. The future has not yet come. Whatever does occur in the future will arise and pass away in the future. There's no point in worrying over it now, as it's not yet occurred. So, contemplate in the present. The present is the cause of the future. If you want a good future, create good in the present, increasing your awareness of what you do in the present. The future is the result of that. The past is the cause, and the future is the result of the present. Knowing the present, one knows the past and the future. Then one lets go of the past and the future, knowing they are gathered in the present moment. Understanding this, that wanderer made up his mind to practice as the Buddha advised, putting things down. Seeing ever more clearly, he realized many kinds of knowledge, seeing the natural order of things with his own wisdom. His doubts ended. He put down the past and the future, and everything appeared in the present. This was Eko Dhammo, the one Dhamma. Then it was no longer necessary for him to carry his baking bowl up mountains and into forests in search of understanding. If he did go somewhere, he went in a natural way, not out of desire for something. If he stayed put, he was staying in a natural way, not out of desire. Practicing in that way, he became free of doubt. There was nothing to add to his practice, nothing to remove. He dwelt in peace, without anxiety over past or future. This was the way the Buddha taught. But it's not just a story about something that happened long ago. If we at this time practice correctly, we can also gain realization. We can know the past and the future because they are gathered at this one point, the present moment. If we look to the past, we won't know. If we look to the future, we won't know, because that is not where the truth is. It exists here, in the present. Thus the Buddha said, "I am enlightened through my own efforts, without any teacher." Have you read this story? A wanderer of another sect asked him, "Who is your teacher?" The Buddha answered, "I have no teacher. I attained enlightenment by myself." But that wanderer just shook his head and went away. He thought the Buddha was making up a story, and so he had no interest in what he said. He thought it was not possible to achieve anything without a teacher and guide. It's like this. You study with a spiritual teacher and he tells you to give up greed and anger. He tells you they're harmful and that you need to get rid of them. Then you may practice and do that. But getting rid of greed and anger didn't come about just because he taught you.
You had to actually practice and do that. Through practice, you came to realize something for yourself. You see greed in your mind and you give it up. You see anger in your mind and give it up. The teacher doesn't get rid of them for you. He tells you about getting rid of them, but it doesn't happen just because he tells you. You do the practice and come to realization. You understand these things for yourself. It's like the Buddha is catching hold of you and bringing you to the beginning of the path. And he tells you, here is the path, walk on it. He doesn't help you to walk, you do that yourself. When you do travel the path and practice Dhamma, you meet the real Dhamma, which is beyond anything that anyone can explain to you. So, one is enlightened by oneself, understanding past, future and present, understanding cause and result. Then, doubt is finished. We talk about giving up and developing, renouncing and cultivating. But when the fruit of practice is realized, there's nothing to add and nothing to remove. The Buddha taught that this is the point we want to arrive at, but people don't want to stop there. Their doubts and attachments keep them on the move, keep them confused, and keep them from stopping there. So when one person has arrived but others are somewhere else, they won't be able to make any sense of what he may say about it. They might have some intellectual understanding of the words, but this is not real understanding or knowledge of the truth. Usually, when we talk about practice, we talk about entering and leaving, increasing the positive and removing the negative. But the final result is that all of these things are done with. There is the Seka Pugala. Seka is one in training, one who has reached the first stage of enlightenment, but not yet at the final goal. The person who needs to train in these things. And then there is the Aseka Pugala, one who is beyond training, an Arahant. The person who no longer needs to train in anything. This is talking about the mind. When the mind has reached this level of full realization, there is nothing more to practice. Why is this? It's because such a person doesn't have to make use of any of the conventions of teaching and practice. This person has abandoned the defilements. The Seka person has to train in the steps of the path, from the very beginning to the highest level. When they've completed this, they are called Aseka, meaning they no longer need to train because everything is finished. The things to be trained in are finished. Doubts are finished. There are no qualities to be developed. There are no defilements to remove. Such people dwell in peace. Whatever good or evil there is will not affect them. They are unshakable no matter what they meet. This is talking about the empty mind. Now you will be really confused. You don't understand this at all. If my mind is empty, how can I walk? Precisely because the mind is empty. If the mind is empty, how can I eat? Will I have desire to eat if my mind is empty? There's not much benefit in talking about emptiness like this when people haven't trained properly. They won't be able to understand it. Those who use such terms have sought ways to give us some feeling that can lead us to understand the truth. For example, the Buddha said that in truth, these sankhara that we have been accumulating and carrying from the time of our birth until this moment are not ourselves and do not belong to us. Why did he say such a thing? There's no other way to formulate the truth. He spoke in this way for people who have discernment, so that they could gain wisdom. But this is something to contemplate carefully. Some people will hear the words, "nothing is mine," and they'll get the idea that they should throw away all their possessions. With only a superficial understanding, people will get into arguments about what this means and how to apply it. This is not myself, quote unquote, doesn't mean you should end your life or throw away your possessions. It means you should give up attachment. There is the level of conventional reality and the level of ultimate reality, supposition and liberation. On the level of convention, there is Mr. A, Mrs. B, Mr. L, Mrs. N, and so on. We use these suppositions for convenience in communicating and functioning in the world. The Buddha didn't teach that we shouldn't use these things, but rather that we shouldn't be attached to them. We should realize
that they are empty. It's hard to talk about this. We must depend on practice and gain understanding through practice. If you try to get knowledge and understanding by studying and asking others, you won't really understand the truth. It's something that you have to see and know for yourself through practicing. Turn inwards to know within yourself. Don't always be turning outwards. But when we talk about practicing, people become argumentative. Their minds are ready to argue because they've learned this or that approach to the practice and have one-sided attachment to what they have learned. They haven't realized the truth through practice. Did you notice the Thai people we met the other day? They asked irrelevant questions like, "Why do you eat out of your alms bowl?" I could see that they were far from Dhamma. They'd had modern education, so I can't tell them much. But I let the American monk talk to them. They might be willing to listen to him. Thai people these days don't have much interest in Dhamma and don't understand it. Why do I say that? If someone hasn't studied something, they're ignorant of it. They've studied other things, but they're ignorant of Dhamma. I'll admit that I'm ignorant of the things that they have learned. The Western monk has studied Dhamma, so he can tell them something about it. Among Thai people in the present time, there is less and less interest in being ordained, studying and practicing. I don't know if it's because they're busy with work, because the country's developing materially, or what the reason might be. In the past, when someone was ordained, they would stay for at least a few years, 4 or 5 rains. Now it's a week or 2. Some are ordained in the morning and disrobe in the evening. That's the direction it's going in now. One fellow told me, if everyone were to be ordained the way you prefer, for a few rains at least, there would be no progress in the world. Families wouldn't grow. Nobody would be building things. I said to him, your thinking is the thinking of an earthworm. An earthworm lives in the ground. It eats earth for its food. Eating and eating, it starts to worry that it's going to run out of dirt to eat. It is surrounded by dirt. The whole earth is covering its head, but it worries it'll run out of dirt. That's the thinking of an earthworm. People worry that the world won't progress, that it'll come to an end. That's an earthworm's view. They aren't earthworms, but they think like them. That's the wrong understanding of the animal realm. They are really ignorant. There's a story I've often told about a tortoise and a snake. The forest was on fire and they were trying to flee. The tortoise was lumbering along, and then it saw the snake slither by. It felt pity for that snake. Why? The snake had no legs, so the tortoise figured it wouldn't be able to escape the fire. It wanted to help the snake, but as the fire kept spreading, the snake fled easily, while the tortoise couldn't make it, even with its 4 legs, and it died there. That was the tortoise's ignorance. It thought, if you have legs, you can move. If you don't have legs, you can't go anywhere. So it was worried about the snake. It thought that the snake would die because it didn't have legs. But the snake wasn't worried. It knew it could easily escape the danger. This is one way to talk to people who have confused ideas. They feel pity for you if you aren't like them and don't have their views and their knowledge. So, who is ignorant? I'm ignorant in my own way. There are things I don't know about, so I am ignorant on that account. Meeting different situations can be a cause for tranquility, but I didn't understand how foolish and mistaken I was. Whenever something disturbed my mind, I tried to get away from it, to escape. What I was doing was escaping from peace. I was continually running away from peace. I didn't want to see this or know about that. I didn't want to think about or experience various things. I didn't realize that this was defilement. I only thought that I needed to remove myself and get far away from people and situations so that I wouldn't meet anything disturbing or hear speech that was displeasing. The farther away I could get, the better. After many years had passed, I was forced by the natural progression of events to change my ways. Having been ordained for some time, I ended up with more and more disciples, more people seeking me out. Living and practicing in the forest was something that attracted people to come and pay respects.
So as the number of followers increased, I was forced to start facing things. I couldn't run away anymore. My ears had to hear sounds, my eyes to see. And it was then, as an Ajahn, that I started gaining more knowledge. It led to a lot of wisdom and a lot of letting go. There was a lot of everything going on, and I learned not to grasp and hold on, but to keep letting go. It made me a lot more skillful than before. When some suffering came about, it was okay. I didn't add on to it by trying to escape it. Previously in my meditation, I had only desired tranquility. I thought that the external environment was only useful insofar as it could be a cause to help me to attain tranquility. I didn't think that having right view would be the cause for realizing tranquility. I've often said that there are two kinds of tranquility. The wise have divided it into peace through wisdom and peace through samatha, concentration. In peace through samatha, the eye has to be far from sights, the ear far from sounds, the nose far from smells, and so on. Then, not hearing, not knowing, and so forth, one can become tranquil. This kind of peacefulness is good in its way. Is it of value? Yes, it is, but it is not supreme. It's short-lived. It doesn't have a reliable foundation. When the senses meet objects that are displeasing, the mind changes because it doesn't want those things to be present. So the mind always has to struggle with these objects, and no wisdom is born, since the person always feels that he's not at peace because of those external factors. On the other hand, if you determine not to run away, but to look directly at things, you come to realize that lack of tranquility is not due to external objects or situations, but only happens because of wrong understanding. I often teach my disciples about this. I tell them, when you are intently devoted to finding tranquility in your meditation, you can seek out the quietest, most remote place where you won't meet with sights or sounds, where there's nothing going on that will disturb you. There the mind can settle down and become calm because there is nothing to provoke it. Then, when you experience this, examine it to see how much strength it has. When you come out of that place and start experiencing sense contact, notice how you become pleased and displeased, gladdened and dejected, and how the mind becomes disturbed. Then you will understand that this kind of tranquility is not genuine. Whatever occurs in your field of experience is merely what it is. When something pleases us, we decide that it is good. When something displeases us, we say it isn't good. That is only our own discriminating minds giving meaning to external objects. When we understand this, then we have a basis for investigating these things and seeing them as they really are. When there is tranquility in meditation, it's not necessary to do a lot of thinking. This sensitivity has a certain knowing quality that is born of the tranquil mind. This isn't thinking, it's Dhamma vichaya, investigation, contemplation of Dhamma, the factor of investigating Dhamma. This sort of tranquility does not get disturbed by experience or sense contact. But then there's the question, if it is tranquility, why is there still something going on? There is something happening within tranquility. It's not something happening in the ordinary afflicted way where we make more out of it than it really is. When something happens within tranquility, the mind knows it extremely clearly. Wisdom is born there, and the mind contemplates ever more clearly. We see the way that things actually happen. When we know the truth of them, then tranquility becomes all-inclusive. When the eye sees forms or the ear hears sounds, we recognize them for what they are. In this latter form of tranquility, when the eye sees forms, the mind is peaceful. When the ear hears sounds, the mind is peaceful. The mind does not waver. Whatever we experience, the mind is not shaken. So, where does this sort of tranquility come from? It comes from that other kind of tranquility, that unknowing samatha. That is the cause that enables it to come about. It is taught that wisdom comes from tranquility. Knowing comes from unknowing. The mind comes to know from that state of unknowing, from learning to investigate like this.
There will be both tranquility and wisdom. Then, wherever we are, whatever we're doing, we see the truth of things. We know that the arising and ceasing of experience in the mind is just like that. Then there is nothing more to do, nothing to correct or solve. There is no more speculation. There is nowhere to go, no escape. We can only escape through wisdom, through knowing things as they are and transcending them. In the past, when I first established Wat Pah Pong and people started coming to see me, some disciples said, Luang Por is always socializing with people. This isn't a proper place to stay anymore. But it wasn't that I had gone in search of people. We established a monastery and people were coming to pay respects to our way of life. Well, I couldn't deny what they were saying, but I was gaining a lot of wisdom and coming to know a lot of things. But the disciples had no idea. They could only look at me and think my practice was degenerating. So many people were coming, so much disturbance. I didn't have any way to convince them otherwise, but as time passed, I overcame the various obstacles and I finally came to believe that real tranquility is born of correct view. If we don't have right view, then it doesn't matter where we stay. We won't be at peace and wisdom won't arise. Now, people are trying to practice here in the West. I'm not criticizing anyone, but from what I can see, sila, morality, is not very well developed. Well, this is a convention. You can start by practicing samadhi first. It's like walking along and coming across a long piece of wood. One person can take hold of it at one end. Another person can pick it up at the other end. But it's the same one piece of wood. And taking hold of either end, you can move it. When there is some calm from samadhi practice, then the mind can see things clearly and gain wisdom and see the harm in certain types of behavior. And the person will have restraint and caution. You can move the log from either end, but the main point is to have firm determination in your practice. If you start with sila, this restraint will bring calm. That is samadhi, and it becomes the cause for wisdom. When there's wisdom, it helps develop samadhi further. And samadhi keeps refining sila. They're actually synonymous, developing together. In the end, the final result is that they are one and the same. They are inseparable. We can't distinguish samadhi and classify it separately. We can't classify wisdom as something separate. We can't distinguish sila as something separate. At first we do distinguish among them. There is this level of convention, and then there's the level of liberation. On the level of liberation, we don't attach to good and bad. Using convention, we distinguish good and bad in different aspects of practice. This is necessary to do, but it isn't yet supreme. If we understand the use of convention, we can come to understand liberation. Then we can understand the ways in which different terms are used to bring people to the same thing. So, in those days, I learned to deal with people, with all sorts of situations. Coming into contact with all these things, I had to make my mind firm. Relying on wisdom, I was able to see clearly and abide without being affected by whatever I met with. Whatever others might be saying, I wasn't bothered, because I had firm conviction. Those who will be teachers need this firm conviction in what they're doing, without being affected by what people say. It requires some wisdom, and whatever wisdom one has can increase. We take stock of all our old ways as they are revealed to us and keep cleaning them up. You really have to make your mind firm. Sometimes there's no ease of body or mind. It happens when we live together. It's something natural. Sometimes we have to face illness, for example. I went through a lot of that. How would you deal with it? Well, everyone wants to live comfortably, to have good food and plenty of rest, but we can't always have that. We can't just indulge our wishes. But we create some benefit in this world through the virtuous efforts we make. We create benefit for ourselves and for others, for this life and the next. This is the result of making the mind peaceful. Coming here to England and the US is the same. It's a short visit, but I'll try to help as I can and offer teaching and guidance. There are Ajahns and students here, so I'll try to help them out. Even though monks haven't come to live here yet, this is pretty good. This visit can prepare people for having monks here. If they come too soon, it'll be difficult. Little by little, people can become familiar with the practice
and with the ways of the Bhikkhu Sangha, then the sasana can flourish here. So for now, you have to take care of your own mind and make it right. This is the 10th. संक्षेप में हिंदी अनुवाद करके शुरू में कुछ प्रश्न थे तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते तो प्रवचन मिलेगा। एक ने कुछ प्रश्न पूछा था कि मैंने एक जैन मास्टर से पूछा कि भगवान बुद्ध ने पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे क्या किया। उसने कहा ज़्यादा इनका प्रैक्टिस करते थे। पहला प्रश्न था कि किसी ने पूछा कि मैंने भाई जैन मास्टर से पूछा कि भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे क्या किया, तो उन्होंने कहा कि वो तो जाजन करते थे, जो जैन तरीका है। तो कहते मैंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इनका जी से पूछा था, उन्होंने कहा था घोषणा करते हैं। तो अजान ने उत्तर दिया कि इन बेसिकली मैं संक्षेप बता रहा हूँ, इस पचड़े में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हर आदमी वही सोचेगा कि जो वो करता है वैसे उसने भगवान ने भी किया था। असल में परमार्थ सत्य ये है कि भगवान ने परम सत्य को प्राप्त किया, वहाँ पे जो निर्माण का अनुभव किया और जो भी सारे संस्कार थे उनको समाप्त किया। और उसके अंदर कौन सा किस तरीके से किया, ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। तो उसको हमें उस पचड़े में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ एक समुच्चय सच होता है जो कन्वेंशनल ट्रूथ है, एक परमार्थ सत्य होता है। समुच्चय सच पे अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन परमार्थ सत्य ये है कि भगवान ने वहाँ बैठ के मुक्ति प्राप्त की, परम सत्य का अनुभव किया। और केवल बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वृक्ष के नीचे तो वृक्षों पर मंकीज भी होते हैं, पेड़ पे नीचे कई लोग बैठते हैं, तो वो सब के सब बुद्ध नहीं बन जाते हैं। तो उन्होंने परमार्थ सच और समुच्चय सच का वार समझाने का लिए उदाहरण दिया कि जब तुम छोटे थे तब तो बहुत छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए तो तुम वही हो जो तुम छोटे थे या अलग हो? अगर वही हो तो तुम बड़े कैसे हो गए, और अगर अलग हो तो तुम ऐसे नया ऐसे कैसे बन गया? तो ये समझना चाहिए कि हमारी सामान्य भाषा की एक क्षमता है, उसको आप परमार्थ सत्य को समझने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है, ये यंग है, ये ओल्ड है, ये सब एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं है, ये सब रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट हैं। तो हमको इनको परमार्थ सत्य नहीं बनाना चाहिए। एक और प्रश्न के उत्तर उन्होंने बताया था कि मैंने देखा है कई लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों के बलि चढ़ाते हैं, और इससे और समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो दुष्कर्म हुआ, ये अच्छा काम तो नहीं हुआ, दुष्कृत्य हुआ, ये तो पाप काम हुआ। और कहा कि कई समाज में, थाई समाज में भी कैसे ऐसे लोग आ रहे हैं। फिर एक ने प्रश्न पूछा मीमांसा क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका प्रत्यवेक्षण करना। चार दिपात के बारे में बताया, फिर वो चित्त और मीमांसा सेम है या अलग है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली देखा जाए परमार्थ सत्य में तो ये सब चीज़ें चित्त का ही भाग है, लेकिन समझने के लिए उनको अलग अलग कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग उनका फंक्शन है। और हमें समझना चाहिए कि सिर्फ शब्दों से समझने के शब्दों को पढ़ने से हमारी साधना पूरी नहीं होती। उससे वो हमको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पर चलने से ही साधना पुष्ट हुई।
तथागत बुद्ध ने भी यही कहा था कि वो सिर्फ मार्गदृष्टा हैं, बाकी तो काम आपको ही करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वो 5 अंधे लोग और हाथी की कहानी सुनाई, किस तरह से हम अपने छोटे छोटे परसेप्शन के कारण अलग अलग एक ही चीज़ को देख के अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक टीचर को छोड़ के दूसरे के पास जाएँ, फिर तीसरे के पास जाएँ और वो उनको जज ही करते रहते हैं, तो उससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक उन्होंने बताया कि स्क्रिप्चर्स में भी एक इस तरह दृष्टांत आता है, एक मंक का जो कि बहुत जगह घूम के फिर भगवान के पास आता है। तो भगवान उसको समझाते हैं कि जो पास्ट हो चुका है, जो भूतकाल है वो चला गया, और जो भविष्य वो भी आया नहीं है, तो अभी सिर्फ वर्तमान है, तो वर्तमान में रहो, और वर्तमान में जो हो रहा है उसको समझोगे तो भूतकाल और भविष्य काल को भी जान जाओगे, क्योंकि वर्तमान में जो तुम्हारी परिस्थिति है वो तुम्हारे भूतकाल के कर्मों का फल है, और जो भविष्य इस समय के कर्म कर रहे हो वो भविष्य को दिखाएंगे। तो इसलिए भविष्य को भी समझ सकते हो कि भविष्य कैसा होगा। तो इस प्रकार से साधना करते हैं समझ के, तो उचित रहता है, नहीं तो शब्दों के जेल में उलझ जाएंगे। टीचर जैसे आपको समझा सकता है कि आपको लोभ छोड़ना चाहिए, द्वेष छोड़ना चाहिए, वो आपको लोभ हटा नहीं सकता, वो आपको प्रैक्टिस करनी है और लोभ और दोष को कम करना है। तो बहुत जगह इधर उधर घूमने से प्रश्न शंकाएं बहुत उत्पन्न होती हैं, और असली अंडरस्टैंडिंग तो हमको अपने पर काम करने से होगी। लोगों से पूछ के करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जो शुरू में जो आदमी सीखता है, जो सिक्खा पोगल होता है, अभी सीख रहा है, तो उसको इस तरह की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन वो भी अपने अनुभव में करेगा तभी उसका लाभ होगा। और जो असीख है, जो अनंत हो गया, जो कुछ सीखने को बाकी नहीं बचा, वो जो है मुक्त हो जाता है, अनशेकेबल है, उसको हिल नहीं सकता, उसका मानस फिर डाउट नहीं रहता किसी तरह का, कोई डिफायरमेंट नहीं रहती, कोई विकार नहीं रहता। और ऐसे चित्त को ही कई बार एम्प्टी माइंड कहते हैं कि अब आप कहोगे ये एम्प्टी है तो उसमें चीज़ें कैसे आएंगी, उसको लिए एम्प्टी माइंड हो जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे। इसलिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि उनका अर्थ ये है कि वो एक परमार्थ सत्य का हमको दर्शन कराएं, इंगित करें उस तरफ। क्योंकि जैसे भगवान ने कहा है संखार हमारे नहीं है, और भी जो सारे 5 खंड हमारे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सबको फेंक दें हम, या अपनी आत्महत्या कर लें। अब तात्पर्य ये है उनके साथ अटैचमेंट छोड़ दें। तो सिर्फ पढ़ने से या लोगों से पूछने से, अलग अलग लोगों से काम नहीं चलेगा। हमें अंतर्मुखी होना है और अपने आप को जानना है। एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि एक जगह में गया था, क्योंकि विदेश में गए थे, तो किसी ने पूछा होगा थाई ने उनसे कि आप अपने बाउल में से क्यों खाते हैं। तो उन्होंने कहा ये किस तरह के फालतू के सवाल है, इससे ही लगता है कि जो पूछने वाला है उसकी मन स्थिति कैसी है। और आगे बताते हुआ कि एक समय था जब लोग हर थाई कुछ ना कुछ वर्षों के लिए ऑर्डेन होते थे। और आजकल ये समाज जमाना आ गया कि लोग कहते हैं सुबह ऑर्डेन होंगे, शाम को कहेंगे हम तो डिसरोब हो रहे हैं। तो एक ने उनसे पूछा था कि अगर सब ऑर्डेन ही होते रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा, लोग काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि एक केंचुए वाली वृत्ति है जो ये सोचता है कि मैं मिट्टी खा रहा हूँ तो मिट्टी समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कुछ। और एक और उदाहरण उन्होंने दिया एक कछुए और सांप का, कि कछुए को लगा कि मेरी तो टांगे हैं, सांप की तो टांगे नहीं हैं। और एक बार जंगल में आग लग गई तो उन्होंने सोचा कि सांप तो बेचारा चल नहीं पाएगा, तो वो ये सोचता ही रहा। सांप जो अपना सरक के निकल गया और कछुआ अपने आग में जल गया। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति सबकी है। और ऐसा नहीं कि हम कोई सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञापी, सब कुछ जानने वाले हैं। आप लोगों की भी कुछ जानकारी है जो मेरे पास नहीं है।
कई बार साधक लोग सिर्फ कहते हैं हमें शांति के लिए साधना करनी चाहिए और शांति तभी आएगी जब हम सब संसार से दूर रहेंगे और सब चुपचाप ध्यान करेंगे तो शांति आएगी। तो मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे विचार बदल गए। मुझे क्यों खासतौर पर जब मेरे डिसाइपल्स आने लगे, साथ आने लगे, तो उनसे बात करना ज़रूरी था, उनकी सुनना ज़रूरी था। तो मुझे लगा, समझ में आई कि वो शांति किस काम की जो कि किसी से बात करने से ख़त्म हो जाए, संसार में इंटरेक्ट करने से ख़त्म हो जाए। तो सब समझ में आया कि सच्ची शांति तो सम्यक दृष्टि से आती है। जितनी दृष्टि सम्यक होगी उतनी शांति से अपने आप अच्छी पक्की शांति आएगी। जो दूसरी सम्मत की शांति है, जो कि आइसोलेशन में अकेले में रह के, ताकि हम किसी को देखें ना, सुने ना, कोई डिस्टर्बेंस ना, उसका अपना रोल है। लेकिन वास्तविक शांति तो दृष्टि की सम्यक होने से, जब हम सबको ठीक से समझ जाते हैं संसार को, तो वो हमारे पे अगर संसार के इंद्रियों के माध्यम से हम पे इम्पिंज भी करता है तो हमें कोई कष्ट नहीं होता, हमारा चित्त कंपायमान नहीं होता। वो सच्ची शांति है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सच्ची शांति में आप कहते हैं कि धम्म विजय करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कहते हैं करके देखना वाली बात है। क्योंकि जब मन सचमुच में शांत हो, कोई विचार आए, कोई प्रश्न आए सामने, तो उसको बड़े सहज रूप से देखते हैं, उसको समझते हैं और उसको जो भी निदानों करते हैं। मन की जो शांति है वो भंग नहीं होती, क्योंकि जैसा भी प्रश्न हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसको उठते हुए हम ध्यान देते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ये सच्ची शांति है जो कि प्रज्ञा के आधार पर आती है। मैंने बताया कि कई बार मैं काम बिजी रहता है, जब मोनेस्ट्री बनी तो कई लोग आते कहते हैं ये तो लुंगपुर तो हमेशा बात ही करते रहते हैं, लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, सवालों के जवाब देते रहते हैं, ये अच्छी मोनेस्ट्री नहीं है, लगता है इनकी साधना ख़त्म हो रही है, तो वो कहीं और चले जाते थे। तो मैं इस सब बातों का कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे मेरी समझ है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, तो इसलिए इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पश्चिम के, क्योंकि बात दे रहे थे कि आप लोग बुरा न मानिएगा, लेकिन मैंने नोट किया है कि आप लोगों का शील उतना पुष्ट नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ऐसा करिए, आप लोग समाधि का अभ्यास करिए और समाधि के आधार पर फिर आपको समझ में आएगा कि शील तोड़ने का कितना नुकसान होता है, तो फिर आपकी शील पुष्ट होंगे। और जब शील समाधि पुष्ट होती है तो प्रज्ञा पुष्ट होती है, प्रज्ञा पुष्ट होती है तो समाधि पुष्ट होती है। ये सब एक दूसरे को चक्र की तरह सब सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते रहते हैं। शुरू में हम इनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब गुथे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये सब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखा, और तब मुझे समझ में आया कि जो प्रज्ञा है वो सच्चा आधार है शांति का भी। तो जब इस परिस्थिति में जब कोई बीमार हो जाता है, जब प्रज्ञा होगी तो कोई उसको परेशानी नहीं होगी, बीमार हो रहा है, कोई और दिक्कत आ रही है। अगर सिर्फ समता होगी, ध्यान होगा, समत्व भाव होगा, ध्यान होंगे, तो कोई भी चीज़ बाहर की आती है जिससे डिस्टर्बेंस होती है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है बगैर प्रज्ञा के। तो ये संक्षेप में आज का प्रवचन था। अब आज संघानुसति का अभ्यास करना। ऐसे आज दिन को भी चर्चा हुई, अनुसतियाँ बहुत उत्तम तरीका है अपने चित्त को पॉजिटिव रखने का। जो सामान्य पॉजिटिविटी की बात की जाती है कि नहीं नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, वो फॉल्स पॉजिटिविटी है। वो पॉजिटिव थिंकिंग, उचित पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जबकि इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि हम अपने को सक्षम बना रहे हैं, हम मन को शांत सबल कर रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति आए हम उसको हैंडल कर सकें, और मन में श्रद्धा बनी रहे, और श्रद्धा के बल के आधार पे हमारी सांसारिक जीवन में भी और धर्म के मार्ग पे भी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। क्योंकि श्रद्धा के बल पे ही वीर्य जागता है, और वीर्य होता है तो फिर सफलता आती है काम में, और प्रसन्नता जागती है, प्रीति जागती है, प्रसिद्धि जागती है। तो संघानुसति की जो बातें हम रोज चांट करते हैं, जो संघ के गुण हैं, एक बार याद चांट कर लेते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो
सावक संगो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। तो यहाँ तक हमें 4 बातें बताई गई जो श्रावक संघ है। श्रावक मतलब जो भगवान के से सुना है उन्होंने धर्म, तो भगवान का धर्म सुन के जो संघ जो ऑर्डेन हुए हैं, संघ बने हैं या मुक्त भी हुए हैं, तो कैसे हैं वो? सुपटिपन्नो, ठीक तरह से मार्ग पर चलते हैं। उजूपटिपन्नो, बिल्कुल सीधे चलते हैं, बाएं दाएं उसमें कोई डेविएट नहीं करते। न्यायपटिपन्नो, प्रज्ञा के साथ, समझदारी के साथ, राइट व्यू के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ उसको मार्ग पे चलते हैं। धम्मानुधम्म पटिपदा जैसे कहा जाता है। तो न्यायपटिपन्नो और सामीची पटिपन्नो, भली भांति चलते हैं पूरी तरह से। ये एक भाग नहीं छोड़ देते, सारा कॉम्प्रहेंसिवली धर्म की प्रतिपदा करते हैं। ऐसे संघों को हम सब बने, ऐसी हमारी एस्पिरेशन रहे कि हम भी इस संघ के ऐसे ही मार्ग पे प्रतिपादन कर पाए। और संयोग से हमारा सौभाग्य कि ऐसे हमने संघ देखे हैं जिनके साथ इंटरेक्ट हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में। अब अधिकतर लोग आप जानते हैं। और मेरे मन में जब संघानुसति करते हैं, उनका चित्रण आता है, तो समझ में स्पष्ट आता है कि देखिए ये प्रज्ञा के मार्ग क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं लुम्पुर सुमेधो जैसे। और सामीची पटिपन्नो, भली भांति चलते हैं। लुम्पुरली हम हर प्रकार से चीज़ों को देखते हैं। और लुम्पुर पर पियक हैं, लुम्पुर अनंत हैं, उन सबको हमने देखा है। कुछ को बहुत नज़दीक से देखा है, तो समझते हैं कि ये लोग सचमुच में भगवान के श्रावक संघ हैं, जिनके बारे में अगली बात भी सत्य है। यदिदं चत्तारि पुरेश युगानि अट्ठ पुरेश पुग्गला। जो 4 आर्य पुग्गल हैं और उन 4 आर्य पुग्गलों के मार्ग पे लोग हैं, तो इस तरह के जो 8 लोग हैं, ये सब लोग इनमें इस मार्ग पे काफ़ी आगे हैं। ऐसा हमको उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी शिक्षा से स्पष्ट लगता है। तो मन में मोद जागता है, एस्पिरेशन जागती है कि हम भी ऐसे बने। हम भी जो फेटर्स हैं, जैसे लुम्पुर समय तो समझाते हैं, सक्काय दिट्ठी, शीलबद्ध परामर्श, विचिकित्सा, हम भी साधना करते करते इनको छोड़ें। और यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, हम भी उस दिशा में बढ़ते हुए उस क्षेत्र में पहुँचे। तो सब संघानुसति करते समय हम जब याद करते हैं इन महापुरुषों को जिनके साथ हमारा संपर्क हुआ है, और याद करते हैं उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, तो स्पष्ट लगता है कि वो जो भगवान की व्याख्या है संघ की, श्रावक संघ की, आर्य संघ की, प्रतिपादित हो रही है, वो फलीभूत हो रही है, उसका भावना की जा रही है और उसके भावना के फल भी दिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सौभाग्य के हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए। पहले तो मैं सिर्फ ग्रेट डिसाइपल्स की स्टोरीज़ के आधार पे ही मन में भाव जगाते थे कि हाँ देखो हरिपुत्र ऐसे थे, मोगलान ऐसे थे, महाकश्यप ऐसे थे। उसका अपना लाभ है, सबके सब ग्रेट डिसाइपल्स हैं और डायरेक्ट डिसाइपल्स भगवान बुद्ध के। उसको भी हम याद कर सकते हैं, उनके गुणों को, उनकी शिक्षा को, उनके व्यवहार को जो हमने पढ़ा है, उससे भी चित्त में प्रेरणा जागती है। समझ में आता है कि सुपटिपन्नों का क्या अर्थ होता है, उजूपटिपन्नों का क्या अर्थ होता है, कैसे होते हैं, न्यायपटिपन्नों कौन होते हैं, सामीचिपटिपन्नों कैसे बन सकते हैं। तो ये बातें सारी समझ में आती हैं। सारिपुत्र की जीवनी आप पढ़ें, किस तरह से वो संघ के एक माँ की तरह सेवा करते थे, ध्यान रखते थे। सब लोग भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, वो सबसे बाद में जाएंगे
अब जाने से पहले देखेंगे कि हमारे मोनेस्ट्री में कोई बीमार है, कोई बहुत वृद्ध है, उसका हाल चाल पूछेंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। अब सब लोग चले गए, वो देखेंगे कि सब सारे कमरे सब ठीक ठाक रखे हैं, कहीं असावधानी में जल्दी जल्दी में भिक्षु चले गए और उनका निवास ठीक नहीं है, वो सब ठीक करेंगे और सब कुछ करने के बाद जाएंगे भिक्षाटन के लिए सबसे पीछे। तो ये सब पढ़ के मोद जागता है कि से सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संग। भली भांति हर प्रकार से देख के धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। ऐसा ही हमने जिन संघों के साथ मिले हैं, अजान अमरो, अजान केवली को देखते हैं कितना मेटिकुलसली सामी जी पटिपन्नो भगवतो सावक संग, एक एक डिटेल वो स्टडी करते हैं, देखते हैं कैसे संघ की रक्षा करते हैं, संघ का ख्याल रखते हैं। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति। तो ये सब जब ऐसे हम संघ के संपर्क में आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। हम उनके प्रति हाथ जोड़ के अपने आप खड़े होते हैं, उनकी आदर सत्कार करने का मन करता है, उनको भोजन दान देने का मन करता है, उनको बुलाने का अपने घर मन करता है। तो ये स्वतः ही हम देखते हैं कि ये बात सचमुच में सत्य है। अजान चंदाश्री आई, अजान सुंदरा आई, सबको कितना अच्छा लगा, कैसी मैत्री, कैसा भाव, अपनापन का भाव उनके अंदर, और सबकी इच्छा थी कि वो हमारे घर आए, हम उनको भोजन कराएं। तो आहुने हो, पाहुने हो, दक्षिणे हो, उनको कुछ दान दें, अंजलि करनी हो, अनुत्तरंग पुण्यखेत्रम लोकस, क्योंकि वो इस श्लोक में अद्वितीय पुण्य के क्षेत्र हैं। पुण्य क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र में अगर हम कुछ पुण्य करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ सेवा करेंगे तो उसके फल बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि एक उपजाऊ ज़मीन में बीज डाला जाए तो बहुत अच्छा फल निकलता है, और वही बीज किसी और ज़मीन में जो उतनी उपजाऊ ना हो डाला जाए तो हल्का फल आता है। तो इसी प्रकार जो सेवा अरहंतों के प्रति, आर्य संघों के प्रति की जाती है उसका फल और उतना अच्छा ही आता है। तो हमने सेवा की है उसको याद करके प्रसन्न हो सकते हैं और कृतज्ञ हो सकते हैं इन सभी आर्य संघों के प्रति कि लोगों ने ऐसी कठोर तपस्या की, साधना की, आर्य बने और हम लोगों को अपने सानिध्य का सुअवसर दिया, हम लोगों के लिए प्रेरणा बने और हम भी इस मार्ग पे इसी तरह चलते रहें। ऐसी प्रेरणा जागती है तो मन में प्रसन्नता जागती है, इंस्पिरेशन जागती है, प्रेरणा जागती है। तो ये सचमुच में पॉजिटिविटी आई है मन में और सत्य के आधार पे आई है, कोई इमेजिनेशन के आधार पे नहीं, तृष्णा के आधार पे नहीं आई है, सत्य के आधार पे आई है। तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सत्य के आधार पे जो भी काम किया जाता है, जो भी मन के भाव जगाए जाते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, वो कभी भी खोखले नहीं होंगे, कभी हमको बेचैन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार संघानुसति करके मन को प्रसन्न करके हम थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं और चित्त के प्रसन्नता को, चित्त की प्रफुल्लता को शरीर पे उसका असर होते हुए जान सकते हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। और अगर शरीर को देखते देखते आप याद करें किस तरह से हमें अवसर मिले
पिंडपात कराने के पुरलियम के साथ सारे संघ को किस तरह से हमारे घर अजान हमरो आए, अजान नचलो आए, अजान चंद्रश्री आई, उनमें प्रसन्नता जाती है। उस प्रसन्नता को क्या हमें अवसर मिला उनको भोजन दान देने का, तो उसको याद करके मन प्रसन्न होता है। सत्य क्या है? सत्य बात है वो। तो एक बार फिर संघ के गुण याद करके समापन करते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुङ्गला, एष भगवतो सावक संगो, आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलिकरणीय, अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। और इसी मुदित चित्त से सबके प्रति मंगल कामना। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।